गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के क्लासेस में सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड सम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमने वन क्लासेस जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ले चुके हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी की नेक्स्ट क्लासेस है, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, डैश इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी एट थर्मल पावर हाउस। आंसर होगा कोल इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी एट थर्मल पावर हाउस। नेक्स्ट, डैश इज refined into products such as petrol, diesel, kerosene oil, etc. पेट्रोलियम इज, यहाँ होगा आपका पेट्रोलियम इज refined into products such as petrol, diesel, kerosene oil, etc. A dash power plant is an arrangement in which kinetic energy of flowing water is transformed into electric energy. करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ होगा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज एन अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट, फायरवुड एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स and the dead materials of living beings are collectively called biomass। यहाँ पर आपका बायोमास होगा। नेक्स्ट, the fermentations of animal dungs that takes place in the absence of air due to the presence of aerobic bacteria presence in animal dungs is called anaerobic fermentations। यहाँ होगा anaerobic fermentation। The chief constituent of biogas is methane gas। The chief constituent of biogas is methane gas। Moving air is called wind। Winds are formed due to dash hitting of land mass and ocean। Winds are moved due to UN hitting of land mass and ocean। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपका यूनेब होगा, UN। नेक्स्ट, मूविंग एयर हैज लार्ज अमाउंट ऑफ dash energy।
Moving air has large amount of kinetic energy. The energy radiate out by the sun in the form of dash waves is called solar energy. The energy radiate out by the sun in the form of electromagnetic waves is called solar energy. इस जगह पे electromagnetic waves होगा. The approximate value of solar constant is 1.4 kilovolt per meter square per second. अगेन आपको बताते हैं, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नेक्स्ट, a greenhouse is used in very dash countries to grow vegetables and flowers in winter. A greenhouse is used in very cold countries to grow vegetable and flower in winter. A device which directly convert solar energy into kinetic energy is called solar cell. The group of solar cell connected in specific pattern to produce desired power difference and magnitude of current is called solar panel. Next, the device which converts light energy into electric energy due to the generations of potential difference is called photovoltaic cell. The device which convert light energy into electric energy due to the generations of potential difference is called photovoltaic cell. Next, dash is dark colored, viscous and foul smelling fossil fuel. Petroleum is a dark colored, viscous and foul smelling fossil fuel. The decompositions of animal dungs or biomass in the absence of air is called anaerobic respirations. The decompositions of animal dungs or biomass in the absence of air is called anaerobic respirations. Next,
A device which can convert wind energy into useful mechanical energy is called windmill. MILL. A device which can convert wind energy into useful mechanical energy is called windmill. The process used for obtaining charcoal from wood is called destructive distillation. The process used for obtaining charcoal from wood is called destructive distillation. Dash is a process in which the nucleus of heavy atom, which is bombarded with a slow moving neutron. Nuclear fission. Nuclear fission is a process in which the nucleus of a heavy atom, which is bombarded with a slow moving neutrons. यहाँ आपका होगा न्यूक्लियर फिजन. Dash is the main part of a biogas as a plant. Digester. DIGESTER. Digester is the main part of a biogas plant. अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं. डाइजेस्टर इज द मेन पार्ट ऑफ ए बायोगैस प्लांट. When placed in sun for 2 to 3 hours, temperature inside the solar cooker may go up to 140 degrees Celsius. When placed in sun for 2 to 3 hours, temperature inside the solar cooker may go up to 140 डिग्री सेल्सियस. तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने अबाउट 20 to 23 तक क्वेश्चंस को बाय सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स मेथड में हम लोगों ने सीखा. और ये टॉपिक द सोर्स ऑफ एनर्जी. जो अगली क्लासेस होगी वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे वो सोर्स ऑफ एनर्जी की होगी. थैंक यू.